रिटर्न फाइल हो गया, टैक्स भी करेक्टली डिडक्ट हो गया, एवरीथिंग लुक्स सॉर्टेड, बट स्टिल योर रिफंड इज स्टक। व्हाई? मैं हर रिटर्न फाइलिंग सीजन देखता हूँ और अक्सर प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं होती है, बस एक छोटा सा चेक मिस हो जाता है एंड योर रिफंड इज स्टिल स्टक। Hi everyone. Today I am not going to stress upon any provision of the Income Tax Act, but we will discuss some important checklists that you should ensure before filing of your return of income. So save this video right now क्योंकि फाइल करते टाइम ये चेकलिस्ट आपसे बहुत बार मिस हो जाती है। Point number 1 is start with your own records and not the income tax portal. So the first mistake that people make is opening the income tax portal before collecting your own documents. अगर आप एक सैलरीड है तो आपका फॉर्म 16, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट या फ्रीलांस इनकम्स, ये गेट दिस डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, क्योंकि अगर आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट होंगे तो रिटर्न कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। और याद रखिए, पोर्टल आपके मिसिंग रिकॉर्ड्स को कभी करेक्ट नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 इज checking your AIS, the annual information statement. So, AIS may show something you might have forgot. यहाँ काफी टैक्स पेयर्स सरप्राइज हो जाते हैं। आपको अपनी सैलरी इनकम याद रहती है, एफडी इनकम याद रहती है, बट योर AIS माइट शो डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन इनकम या प्रॉपर्टी रिपोर्टिंग इनकम. So before filing of your return of income, you must see not only what you remember but also your income which the income tax department can see. So point number 3, match your AIS with your form 26A. Does your AIS, form 16, bank TDS certificate all say the same story? और अगर एक भी mismatch है तो there are high chances that your refund might get delayed, or worse, you might even get a verification notice. Point number 4, never trust your pre-filled data blindly. Yes, the income tax portal pre-fills a lot of your data now. It's useful, but it is not always perfect. So always verify your salary, capital gain statement and tax credits before hitting the submit button. Pre-filled data को अपना स्टार्टिंग ड्राफ्ट समझिए, फाइनल आंसर नहीं. Point number 5, claim what your employer have missed or you might have missed submitting it to your employer. This is crucial because not every tax deduction is routed through your employer, or there might be instances where you might have forgot to submit the proofs to your employer, or your employer might have forgot considering in your form 16. So you have to check for all the deductions in your form 16. अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो या कुछ डिडक्शन हो जो फॉर्म 16 में नहीं है, so you can still claim it in your ITR. बस keep all the supporting documents for your claim ready, so don't miss out on your hard earned money via deduction. Point number 6 is validating your bank account. लोग सारा टाइम टैक्स कंप्यूटेशन और अदर थिंग्स पे लगा देते हैं एंड दे फॉरगेट ऑन वन ऑफ द मोस्ट एंड बेसिक थिंग, दैट इज validating your bank account on the income tax portal. Make sure the account where you want your refund is active and pre-validated on the income tax portal. बस ये 1 मिनट का चेक आपको हफ्तों का वेट से बचा सकता है. Point number 7, using the correct income tax return form. If you choose the wrong income tax return form, your ITR becomes defective and the consequences follow. Also, one of the most important thing is never miss on deadlines and also on your data. You have to be thorough with your entire data. So now the conclusion is most filing problems don't happen because the taxpayers do something dramatic. It happens because they rush. So थोड़ा सा extra time before submission can save a lot of time and trouble later on. If you found this video useful, share this with your friends who is filing their tax returns soon and follow for more such videos. Thank you.